तो हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइटशाडो। और आज हम खेलने जा रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट। तो आज हमें पता चला है कि इस शहर में रात में कोई ऐसा इंसान आता है जो इस शहर को रात में बचाता है। मान लो एक तरह से वो बैटमैन है इस शहर का, मॉन्स्टेड का बैटमैन। तो हमें पता लगाना है कि वो बात जो ये बोल रहे हैं वो सच है या फिर बस ये अफवाह ऐसा ही फैला रहे हैं। ओके तो गाइस, हमें उस अफवाह के बारे में लोगों से पूछ कर भाई पता लगाना है कि वो सच है झूठ। पहले देखते हैं क्या चक्कर है इसका। अरे यार हमेशा यही होता है, रुको। ये हमेशा पोस्टर आके ना भैया मूड ख़राब कर देता है। तो हम इससे पूछना बारटेंडर से, पहले बैठ जाते इज्जत से पूछते हैं। ये क्या हुआ भाई, मैं उल्टा दिशा में क्यों बैठ गया? उसकी तरफ मुँह करके बैठ रहा था यार, बेइज्जती हो गई हमारी। इसमें बैठ के देखता हूँ, रुको। और चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही बता दो। So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. हाँ, तो उसी के बारे में तो हम Even जानना है। minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? किसके बारे में बात करें पाइमन? Paimon needs to take a deep breath first. बताओ भाई, जल्दी बताओ। It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. तो बताओ तो भाई क्या चल रहा है? ओके The Darknight hero. ओके, डार्क नाइट हीरो सुनने में तो बहुत कूल है भाई नाम। पाइमन, he literally just said it's not a scary story. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. सुन भी नहीं रहे थे पाइमन भाई, क्या कर रही है? तो किससे डर गई The पाइमन? Darknight hero. It is said that he appears in the middle of the night Okay, to fight evil रात and को आता है, uphold हाँ, justice. बैटमैन But की to तरह be ना एकदम। honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. Has anyone ever seen him? क्या किसी ने उसे देखा है या बस ऐसे अफवाह फैला रहा है? ये पहला ऑप्शन यही है। और दूसरा है कि why would he hide his identity? हाँ, वैसे छुपाता क्यों है? क्या पता भाई, क्या पूछे? ये पूछता पहले वाला। I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. ओके तो किसी ने उसका चेहरा ढंग से नहीं देखा, Perhaps पर that's उसे why देखा he है। only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Darknight hero is more than just a groundless rumor. ओके तो अफवाह बोल रहा है ना ये। Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. ओके तो हमें प्लाजा में जाना है। Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. चलो ना भाई, इससे पूछ सकते हैं। Ancient alchemy. ओ इसे पता है। I'm trying to find out about the Dark Knight hero. तो never heard of him. Sorry, maybe someone else knows something. तो इसे कुछ नहीं पता। तो ठीक है भाई, इसे तो नहीं पता, किसी और से जाके पूछते हैं। इससे पूछते हैं, ये तो हमेशा यहाँ पे रहता है। अरे इसे भी नहीं पता यार भाई। इससे पूछे। You want to find out about the Darknight अच्छा, hero? इसे पता चल सकता है। Look no further. It's me. Wow. I am the Darknight hero. हाँ मुझे भी लगता है कि यही है। प्रकाश तुम्हें भी लगता है क्या यही है डार्क नाइट हीरो? मुझे तो पक्का लगता है भाई, 100% लगता है कि यही है डार्क नाइट हीरो। Just as I thought, it was you all along. I'm joking. Don't take everything so ओ, seriously. मुझे तो लगा कि यार सही में थी यार, ऐसा भाई। ओके Jokes aside, I do think that the Darknight hero and I have one thing in common. पर वो क्या है? What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstad'S safe. Wow, Okay. so you're a nocturnal vigilante too? रात को जागते हैं, ऐसा हुआ। No. I just mean he must be seriously rich. मतलब Why is that? हाँ मुझे भी समझ People आया। only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. तो ऐसा बोलना It's the चाहती कि वो same अमीर होगा in क्योंकि every तभी hero जब story, तुम isn't अमीर it? होते तभी तुम सोशल सर्विस करते, ऐसे कुछ बोलना चाहती है वो ना। ओके सो यू जस्ट वांटेड टू फ्लॉन्ट योर वेल्थ। No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days.
Same difference. अरे यार You बताओ ना, are मुझे the जानना है boss कि that कहाँ पे can't भाई, steal देखा ही दिखा after करके। all. Why don't you ask the guards at the city gate? ओके, They do night shifts all the time. They must know something. तो हमें गार्ड से जाके पूछना है ना कि नहीं पता, ही नहीं पता कि डार्क नाइट हीरो के बारे में। ओके गार्ड्स, किससे पूछे? अच्छा तू बोल, चल तेरे से पूछता हूँ। You want to know about him? बताओ बताओ भाई। In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. ओके, तो इसने देखा है उस This डार्क is the नाइट guy हीरो we को। need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. डायरेक्ट भाई पॉइंट पे आते हैं हम भाई, beginning. 5-1 भी सही है एकदम, पॉइंट पे आ रहे हैं हम, वेस्ट नहीं करते I टाइम was पॉकेट पे। patrolling one night when suddenly I heard something. तो I rushed over to check it out. ओके, I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. ओके तो कोई So गुंडे I बदमाश आए quickly थे। hid. ओके तो ये छुप गया। Kid, you're supposed to be a guard. वही तो गार्ड होके भी That was छुप रहा when है। he appeared. फिर He was dressed अच्छा, in black from head to toe, perfectly hidden in the night. ओके The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. ओके, काले रंग का कपड़ा पहनता बैटमैन थोड़े Guess तो what I पक्का did भाई। next? चेहरा मास्क तो नहीं लगा रखा था भाई बैटमैन जैसा, भाई बता दे भाई, मुझे लगता है बैटमैन है। गेस व्हाट आई डिड नेक्स्ट, रन अवे, बिकम हिज साइड की। भाग गया होगा। I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. तो भाई देखा तो I भागा तो didn't हम want to be सही a से nuisance to रहे the Dark Knight hero. So भाई instead, कैसा गार्ड है I देखो यार, headed to the Knights of Favonius's बंदे देखते हैं भाई residence. भाग जाता है। You think the Dark Knight hero might be one of the knights? हाँ क्या पता हो सकता है नाइट Correct. का। I thought Knights surely पे हो someone सकता with है। such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. जो मेरे सामने खड़ा है भाई वो तो भाग गया था But पर। it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius Okay. after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? मुझे पता है एक I'm आदमी, sure they would मुझे पता है warmly एक आदमी, welcome someone of his पर मैं उसका नाम नहीं abilities. लेना चाहता हूँ अभी। So the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? मुझे पता है, मुझे Hey, आ गया, don't be like आइडिया आ that. गया मुझे कौन हो At सकता least है। by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. ओके Wind तो go with भाई जो फूल वूल बेचते हैं उनको पता है इनके बारे में, तो चलो भाई पूछते हैं। ये तो खड़ी, इसी को ही पता होगा What's wrong with me? क्या हो गया भाई इसे, Why can't I get him out of my mind? किसके बारे में बात कर रही है भाई, ये Hello? खोई हुई है भाई एकदम। We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! अरे 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 Sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do? If Master DILUC ever finds ये तो out. डिलू के पीछे पड़ी है भाई। What's DILUC got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used बताओ to भाई, जल्दी think बताओ। DILUC was the one for me. ओके But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. अब भाई यहाँ पे फ्लैश ऑफ फायर आ गया, तो मुझे भाई मैं जो सोच रहा था ना, जिसका नाम सोचा था वो भैया एकदम मुझे पक्का लगता है कि वही है डार्क नाइट हीरो, पर अभी भी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। Who तुम्हें पता चल knows? जाएगा, तुम्हें भी पता चल गया होगा Now वैसे। that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. तुम्हें पता होगा गाइस, It lit बता up रहा the हूँ, पक्का whole तुम्हें भी पता area होगा in an कि instant. कौन हो सकता है डार्क I नाइट हीरो। remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. ओके Hmm. तो हमें ऐसे बंदे खोजना जिसके Not पास so विजन no भी है idea. पर वो नाइट But we ऑफ already हेवनियस का have so बंदा नहीं many है। people.
Guess we gotta see for ourselves. ओके Let's चल चल take a चल look around the city at nighttime. If रात ही we're हो lucky, रही we पाइमन just क्या might बोल रहे bump हैं into भाई him. रात ही हो रहा है भाई अभी It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Darknight hero. तो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि वो जो नाइट ऑफ हेवनियस का मेंबर नहीं है और इसके पास पायरो वाले विजन्स है तो वो कौन हो सकता है डार्क नाइट हीरो पता है तुम्हें कौन हो सकता है मुझे भी नहीं पता तो चलो देखते हैं भाई क्या पता भाई कहाँ जाना है वैसे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ओके अरे यहाँ पे तो मेज है और यहाँ पे हमारा डिलुक है ओ भाई इतना फास्ट अरे 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 भैया काफी निंजा बन गया भाई डिलुक का हमारा एकदम एनीमे The Darknight hero is Master टू एनीमे DILUC. हमें तो पता ही नहीं था है ना गाइस तुम्हें पता था मुझे तो नहीं पता था सही में यार ओ माय गॉड मैं कैसे भूल गया कि डिलुक हो After सकता है managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. डिलुक यू आर द डार्क नाइट हीरो एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह Dark Knight Hero? आई कैन बिलीव दिस Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. भाई अजीब सा नाम है बोल रहा How's है पसंद नहीं this है the नाम first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Darknight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. ओके Huzzah! The great mystery of the Darknight hero of Mondstadt. We solved it. केस क्लोज Now then, Mr. Darknight hero. व्हाट आर यू डूइंग हियर Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. इसे नाम पसंद नहीं आया Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. मैं उसे नाम ही नहीं रखा है भाई पहली बात तो ये Captain Pi. हाँ भाई इससे अच्छा तो डार्क नाइट हीरो ही अच्छा था Captain Pyro. ओके Tell us, Captain Pyro, what happened here today? क्या हो गया भाई It was the Abyss Order. Them again? अभी से ऑर्डर मॉन्स्टर्ड I पे भी don't हमला know करने what का the पहले तो devil बाहर they're ही आते plotting थे this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. ओके Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. मैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं कि हैव यू बीन डीलिंग विद देम अलोन द होल टाइम और दूसरा है व्हाई डोंट यू गेट द नाइट्स ऑफ हेवनिस टू हेल्प मुझे पता दूसरा वाला क्यों है क्योंकि ये नाइट ऑफ हेवनिस से पता नहीं कुछ पुरानी मतलब हिस्ट्री है होगी हमें भी नहीं पता इतना इसने बताया नहीं है क्यों पता नहीं पर वो उनसे साथ मतलब इतना घुल मिल के नहीं रहता ये इसीलिए उनके नाइट ऑफ हेवनिस के साथ भी रहना भी नहीं चाहता हैव यू बीन ये पूछते ना कि इतना दिनों से कि अकेले रोक रहा तूने I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these पक्का भाई parts. डिलुक के नाम पसंद नहीं The है Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. ओके तो सो दिस इज अ जॉब फॉर ऑलमाइटी डिलुक देन इट सीम्स यू हैव सम हिस्ट्री विद द नाइट्स देखा ये बोलते हैं What's past is देखा ये बताता past. भी नहीं ना वही तो I दिक्कत है would ना prefer not to discuss भाई it. बताता क्यों नहीं है Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master DILUC? Your wish is our command. भाई You क्या चाहिए अब must इसे keep my identity a ओके secret. तो हम कौन सा बता रहे Above हैं all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of ओके this. ठीक है भाई नहीं बताएंगे प्रॉमिस ए बच्चे लोग आ गए टुडू 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 What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? उनसे लड़ना भाई They appear to एक just हिट be में जाएंगे small timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. ठीक है मुझे दे Remember, don't tell a नहीं soul. बता रहा थैंक यू भाई नहीं बता रहा किसी को ले प्रॉमिस Hey! You're just gonna leave us like this? तो कौन सा बड़ा भाई ताकतवर कौन भाई हमारा आते हैं ना ओ भाई इतना ताकतवर ओ माय गॉड मैं क्या करूंगा भाई ओ माय गॉड Denied. Cut to the chase.
निकलो ना यहाँ से, समझ नहीं आता क्या बोल रहा भाई, हरा पाओगे लगता है तुम्हें भाई, परेशानी कर देते देखो ना। Born of ice and frost. या आ जा भाई, हो गया 2 सेकंड है भाई, बच्चे लोग भाई कहाँ से आए थे। और वो डिलुक कहाँ गया? Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. कुछ नहीं, बस थोड़े बच्चे चिल्ला रहे थे, आप खेल रहे थे रात को सोने की जगह, तो हमने उसे भगाया भाई। Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. पाइमॉन Unless you're looking for the Darknight hero. in ऐसे which बोलेगी case- तो पता चल जाएगा। The Darknight hero. You नहीं saw him? नहीं Oh, the Darknight hero is... नहीं 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 You, नहीं नहीं the भाई, hero who पाइमॉन safeguards Mondstadt from the एक shadows. जब चल पाइमॉन On मरवाई behalf of the है। Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. नहीं हम नहीं है डार्क नाइट हीरो, It's nothing. हम नहीं है Really, डार्क नाइट too हीरो भाई, kind. ये हमें समझ रहा है Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the भाई। city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you तो ever हम तो arrived बोल here. रहे थे, हाँ भाई ऐसा क्या हम झूठ बोल रहे थे, पकड़ा गया, सॉरी Why would you lie to me about that? सॉरी Never mind. You don't seem like bad ठीक है folks. जा सकते हम। But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in अरे more यार पाइमॉन detail. ने मरवा दिया हमें। You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. ओके तो हमने बेटाल तो दिया उसे भाई कि हम नहीं थे करके। Seems like Huffman has अभी something पाइमॉन ने to भाई हमें tell मरवा ही us दिया था भाई, you about सारी the पोल खोल दी Darknight थी पाइमॉन ने, hero. अभी 2 सेकंड हम रुक जाते तो। Better head over to the Knights of Avon. तो हमें यहाँ जाना है ना, Yes, and see if you can find him. तो साथ तक हमें इसे रोकना है कि कीमत बता करके ना, ऐसा कुछ, साथ तक हमें इसे रोकना है। Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? सॉरी वी हैव गॉट नथिंग, ये बोल दे डायरेक्ट। Is that so? That is a pity indeed. The situation is... Here, क्या take a हो look गया at भाई, this. दिखाओ भाई जल्दी। Jeez, what horrible तो handwriting. मुझे ऊपर वाले तो नहीं नीचे वाले थे, Let me take a closer ठीक है look. पढ़ते हैं इसे। Huh? 2 Some parts of this seem to be complete मुझे पढ़ने gibberish. का मौका मिलेगा पाइमॉन। Indeed. भाई Although पढ़ this is रहा written in the है। common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. ओ Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find ठीक me. है। तो A war declaration sent by the Abyss Order? Oh, this is not good news at all for Master DILUC. Quick, we should go tell him right away. तो चिट्ठी में ये लिखा था कि भाई वो अटैक करना चाहता है ना अभी ऑर्डर पे, How awful. और हमें इसके बारे में डिलुक को बताना पड़ेगा। चलो भाई। Master DILUC! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the इसे कैसे Abyss पता? Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial Oh. matters. ये तो Great! बहुत सही भाई। So, what's the plan, Master हाँ भाई क्या DILUC? करेगा? I'm open to suggestions. You really should join forces with the knights. Stay at the winery until this blows over. क्या बोले? ये बोले क्या पहला वाला? No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity Okay, were पता नहीं वो exposed, डरते हैं ना all my इससे। future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time.
What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. तो वही पता नहीं क्यों पर एबिस ऑर्डर जो है वो डिलुक से पता नहीं क्यों डरती है, तक बहुत ही पावरफुल इसीलिए, और वो चाहती है कि डिलुक भाई मतलब किसी भी तरह डिलुक को ख़त्म करना चाहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भैया फटती है उनके पता है एबिस ऑर्डर। Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. तो ऐसा बोलना चाहता है कि वो जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था उस लेटर पे, तो वो मतलब ऐसे लोगों के लिए, मतलब जो अबिस ऑर्डर के बंदे उन्हीं को समझ आएगा ना, वो कोड की तरह एक तरह से। और वो कोड मतलब मान लो ऐसा बोलना चाहता है कि डिलुक की कोई नाइट ऑफ फेमरिस में ऐसे भी बंदे हैं जो अबिस ऑर्डर के साथ मिले हुए हैं और उन्हें वो कोड समझ में आ जाए क्योंकि वो अबिस ऑर्डर से मतलब मिले हुए हैं, ऐसा है ना, ऐसा बोल रहा है। Why would they send you a written message that only they can read? If they knew we can't read it, why did they write it in first place? It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow. Seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberish it? Decipher Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. तो डिलुक को पता चल चुका है कि इस कोड का मतलब क्या है, या उससे पता चल चुका है कि इस कोड का मतलब जिसे पता हो उसके बारे में पता चल चुका है ना। ओह, मैं डर गया था भैया, क्या आ गया अचानक से करके, भैया सुहर भैया अचानक से डरा दिया था भाई, पीछे आ गए। This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. ओके, तो यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं वो एबिस ऑर्डर वाले बंदे यार। तो हमें भाई खोजना है उस एबिस ऑर्डर वाले बंदे को। उससे पहले हम इधर देख लेते हैं भाई, फल फूल मिल जाता है अपने लिए भाई खाने के लिए। राशन वैसे हम खरीदने का पैसा नहीं, तो फल फूल ही काम चला लेते हैं। और फल फूल, और ये कहाँ से आ गया भाई? हेलो भाई, भाई बच्चों घर से निकलो, चलो चलो। अरे मारना तो मारो यार, ऐसा मत करो। इधर आओ सब, इधर आओ। अरे झुंड में आओ ना यार। हाँ ठीक है। फोटो खिंचा रहा था मैं, एक हिट गए भाई, सही बिल्कुल। अरे ये कहाँ से आ गया? निकल ना। निकल। अरे मर जा। और ये ले रे, बच गया रे। खुल जा भाई दरवाजा। ओके, तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे बंदे भाई। ये ले, अबे ये लो, ये लो, और ये फोटो खिंचाओ, सब लाइन लगो। ये लो। भाई तू कैसे बच गया? अरे मर जा। अरे फल फूल लेना जरूर, रुक जा। अरे टूट जा भाई। अरे टूट नहीं रहा भाई, कैसे डिब्बा है वो। आप लोग यहाँ पे कर सर। अरे यहाँ पे कुछ है। अरे मैं उन्हें मार रहा हूँ यार, जल्दी मारो ना यार तुम लोग। ओके, तो ये भी गए। अरे वो कहाँ गया? वो बड़ा वाला राक्षस कहाँ चला गया? वो देखो पगला रहा है भाई, बच गए। और ये लो, ये ले, ये ले, ये ले, और बच गया। लास्ट में कैसे बच गया? कौनटे कांटे हो चुके। ये ले भाई, ये ले, और ये ले, ये ले भाई। और कोई बचा है भाई? और इससे पहले मैं यहाँ जाना चाहूँगा। देखा भाई, छुपा था, इसे काम आ गया।
भाई सामान मत छोड़ो भाई इसमें गेम में। सब्जी वब्जी पैसा में कौन खरीदेगा अगर तुम्हें फ्री में मिल सकता है तो। और यहाँ पे क्या है? ओके यहाँ पे एक और चेस्ट है भाई। चिंदी चिंदी चेस्ट छुपा के रखते हैं भाई, पता नहीं क्या कर लेंगे उस चेस्ट को बचा के। जल्दी खोल भाई, टाइम नहीं है। ओके तो यहाँ पे भी ये पिद्दी से राक्षस है भाई। क्या भाई सब यहाँ पे आओ। 3, 2, 1 और ये बाय बाय। कहाँ गया? ओ एक और बच गया, बड़ा वाला है। अरे मैं जम जाऊंगा, रुक जा। अबे जम गया सही में। ये ले भाई, रुको। हाँ कैसे? ये ले भाई, मैं पूरा उड़ा लेता हूँ ना भाई। बंदे पूरे उड़ जाते हैं, बचते भी नहीं है भाई। छोड़ो ही मत इन्हें। अबे अबे भाई रुको 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 भाई। मेरे हाथ से देखो डिलुक भैया भी जाता हमारा। निकल साले, अभी मर जाते हैं भाई। कौन भाई? हेलो। अरे भाई ये किसका बालक आ गया? अरे भाई हिलने का मौका दूंगा तभी तो मारेगा ना। भाई टाइम पास करता हूँ भाई मैं इनके साथ। ओ मैं तो डर गया भाई, ये तो हरा देते। इतना ताकतवर बॉस। ओह माय गॉड, इतना ताकतवर बॉस। अरे गाइस देख रहे हो? निकल यहाँ से। ये ले कोंटे में भाई घुसा घुसा के मारेंगे इसे। ये ले बस भाई, इजी था ये तो। How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. डिलुक भाई बता। You appear to have misunderstood the situation you're in. Burn him with searing hand. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your Oh. hands? It burns! भाई डिलुक से पंगा मत ले भाई, चुपचाप बता दे। Crack. Burn him with searing hand again. Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! ठीक है भाई, बताना भाई। नहीं बताया तो भाई और रखवाऊंगा। नहीं मैं बता दे। I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please stop! I'll tell you everything. भाई ऐसा क्यों लग रहा है इसको भाई बोतल में बंद करके बात करवाया जा रहा है? अभी इसका आवाज को क्या हो गया? They will march on the Monstad'S city gates at 10 p.m. tomorrow night. कल 10 बजे। That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames. एक बार और, एक बार और। That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. अरे एक बार और जलाना ना। ओ जस्ट मिल गया गाइस, ये लो भाई। ये बुक फ्री में मिल गया भाई, मुझे चाहिए था बुक का भी। और जस्ट है कि अगल बगल छोटे मोटे। अरे सेब ये कैसे छोड़ सकते हैं भाई? Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master DILUC, sir. Anything you say, Master DILUC, मास्टर और डिलुक सर भाई, सर भी और मास्टर Why भी। are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master DILUC has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. पाइमन में डरती है भैया मुझे डिलुक से। तो हमें हफमैन को बताना है कि ना कि आज क्या होने वाला, लड़ाई होने वाला है, मास्टर आने वाले हैं, सब के बारे में वही बताते चलो। If we do not make contact with the Darknight hero soon. What are we to do about the Abyss Orders challenge? क्या करने It's you जाएंगे two. जल्दी बता। I must admit, वैसे भी वो this आने वाला issue है of the आज। Darknight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it What is? it is, bro? Bury our heads firmly in the sand. Join forces with the Darknight hero. ये बोले।
No, तो that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's heroes' continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. प्राइड वाइड जैसी चीजें क्या तुम्हारे अंदर Well, भी? what's the plan then? ओके Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. प्रोटेक्शन Protection? He seems to be doing just fine without your पाइमान से protection भाई so far, पता you चल जाएगा know. उसे. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this क्यों भाई matter. डार्क नाइट हीरो को ये You aren't मतलब gonna let the मदद करने Dark देना Knight ही hero चाहते be हैं. all heroic हाँ, and वही. stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. काया को पता होगा. Just follow my plan and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master DILUC has been working the bar at the Angel's Share every night. Okay. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master DILUC is the Dark Knight hero? इसे भी पता था बोला था Who ना वैसे. knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Wow, Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master DILUC as soon as Paimonly possible. तो नाइट ऑफ फेवनियस वाले डार्क नाइट हीरो मतलब डिलुक को भाई मदद करने देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मान लो डिलुक मदद करेगा तो भाई ऐसा लगेगा कि मॉन्स्टर्ड वालों को कि ये मतलब जो नाइट ऑफ फेवनियस वाले ये कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब कि मतलब ये बचा नहीं सकते सिटी को डार्क नाइट हीरो के बिना. और नाइट ऑफ फेवनियस भाई अपना रेपुटेशन रखना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि खुद ही वो ये सिचुएशन को हैंडल करा है ना. ओके तो डिलुक से हमें बात करनी है भाई, बताओ. Master DILUC, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counter plan. काउंटर प्लान तो हमें रोकना पड़ेगा ऐसा कुछ. Do you have any ideas? Patience. Let me think for a moment. Okay. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? Alabla. An alibi. If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Okay. Oh, come on. Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. तो हमें मिस्ट फ्लावर्स को लाना है भाई. पता नहीं हमें मिस्ट फ्लावर्स का कुछ तो करना चाहता है भाई. डिलुक तो यहाँ पे भी है भाई, वो तो अभी अंदर था. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait to see how this turns out. So, यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे are समझ you नहीं आ रहा है. certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या Don't चल रहा है worry, यहाँ पे. sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. ओके पर समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है. What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. अरे बता दो ना यार क्या चल रहा है, What's मुझे he समझ नहीं आ gonna रहा. do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. अच्छा तो Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent.
So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, तो but slimes. मतलब Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. तो ये So I thought to इसके ऊपर myself, अट्रैक्ट होता है I ऐसा wonder कुछ? how much trouble I could cause now that I know this. ओके तो मतलब ऐसा बोल चाहते कि जो भी उसने बनाया था उससे तो उससे स्लाइम अट्रैक्ट होता है ना Yikes! What was that noise? फटाका फटाका फोड़ गई Oh, cold. So cold. Oh, Master DILUC. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. भाई अमीर है भाई डिलुक Marvelous! Jolly ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. किसके बारे में Mist बता flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. तो इससे मतलब स्लाइम अट्रैक्ट होंगे It ना really has a strong elemental whiff. Can we test it out? ठीक है Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. नहीं तो बड़े बड़े वाले स्लाइम आ जाएंगे ऐसा कुछ हो सकता है भाई पता नहीं है तो हमें यहाँ पे भाई छिड़ा के देखना है वो जो भी उसने दिया हमें स्लाइम आ जाओ स्लाइम आ जाओ स्लाइम स्लाइम आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्लाइम कुछ नहीं हो रहा है डिलू कुछ नहीं हो रहा है क्या करूँ मैं अच्छा बात करना है मुझे लगा स्लाइम आएगा And then that's it? How long does it take before? ले Hello there. आ गए हेलो Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. अरे यार इन्हें हराना पड़ेगा यार डिलुक तू किससे लड़वा रहा है यार देख तो डिलुक तू चाहता है मैं इनसे लड़ूं ओके फाइन भैया आ जाओ ये ले। अरे उड़ गया भाई कहाँ बंदे तो फैल जाते अभी ये भी आ गए अलग अलग टाइप के आएंगे क्या अरे रुको भाई ऐसे हरकतें नहीं करते Access denied. सब तो है थोड़े बहुत पता नहीं है मैं कहाँ घुस गया भाई ये अंगूर के बीच में अरे तोड़ो भाई इसका शील्ड भाई बहुत ताकतवर शील्ड है इसका वो देखो खेत तो खा कहाँ वो वही कहाँ तेरा घर है उधर ये खा इधर 3 2 1 ले ले ये ले भाई पता नहीं भाई कहाँ घुस जा रहा है अरे ये ले काम खत्म भाई Such a powerful effect from such a small amount of हाँ extract. सोचो अगर इतना सारा गिरा दिया At तो least we didn't go picking wildflowers for एक कटोरी nothing. गिरा दी तो सोचो क्या होगा All right. So can you tell us what your plan is now, Master DILUC? Yes, the plan is... बताओ भाई प्लान ओके And so, I expect it to all go down without a hitch. ओके तो उसने प्लान हमें बता दिया पर पता Are नहीं क्या you है प्लान sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? श्योर भाई मदद I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. ओके तो जो भी प्लान उसके हिसाब से हमें वर्क Let's करना है wait ना until evening to meet Master DILUC at the tavern. ओके तो हमें टैवन जाना है पहले तो हमें इंतज़ार करना है ओके तो हमें इंतज़ार करना है ना तो गाड़ी कहाँ है हमारा हमें रात करना डायरेक्ट तो हम गैस करने जा रहे हैं टाइम ट्रेवल यहाँ पे रात होने वाला है और ये हो गया भाई कहाँ से बंदे भी आ गए अचानक से तो हमें बात किससे करना है इन दोनों से क्योंकि ये नया है अभी आया है रुको पोज एज ए कस्टमर अच्छा तो हमें डिस्गाइज में जाना है कि हम कस्टमर ऐसा ना तो सर हमें एक पौवा मिलेगा मतलब वाइन मिलेगा Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? ओके तो यहाँ पे नजर रखने आया ना ये नाइट Nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll.
What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. ओके तो हमें करना क्या है यहाँ पे? Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Can I start a tab? I also forgot to bring mine. शायद तक हमें बोलने का नाटक करना है कि हम अपने coins बोल कैसे कुछ तो ये बोलते हैं भाई. Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. ओके तो हमें करना क्या है यहाँ पे? अच्छा तो हमें छोड़ के जाना है यहाँ, पता नहीं क्या करना है. Huffman showed up just as expected. तो Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. ओके तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे श्योर मतलब कंफर्म करने आए थे कि जो हफमैन है वो यहाँ पे आया है डिलुक में नज़र रखने या नहीं. फिर जिससे हम यहाँ पे छुप के चुपचाप से वो स्लाइम वाला पाउडर गिरा देंगे जिससे स्लाइम आ जाएंगे और सारे नाइट ऑफ फेमिनिस्ट वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उन्हें लगे कि यहाँ पे अटैक हो चुका अभी ऑर्डर का है ना. Whoa, you used all of it. अबे This is gonna be pretty epic. भाई हमने सब गिरा दिया. Yikes, here comes the slimes. सोचो हमने इतना से गिराया था. Before anyone spots us. ओके सोचो हमने इतना से गिराया था तो वहाँ पे भैया पूरा एकदम छोटे छोटे आ गए थे, मतलब पूरा भर भर के बड़े वाले भी आ गए थे, इतने सारे हमने पूरा ही गिरा दिया. अब सोचो क्या होगा. मुझे तो नहीं पता भाई, पर इससे डिस्ट्रैक्ट पक्का हो जाएंगे भाई. तो डिलुक हमने अपना काम कर दिया. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! तो ये हमारा प्लान है ना. What is it? What happened? तो अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अच्छा Slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, क्या भाई? Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. जितना जिंदगी में देखा उतना टोटल आज ही भाग गए. ऐसा बोल रहा हूँ. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. हाँ भाई हो सकता है. जल्दी जाओ जल्दी जाओ. I have another matter to attend to अरे here. जल्दी जाओ यार. Oh? The matter of your dandelion wine? ओ फंसा दिया. That's not what I meant. तो बताएगा तो फंस जाएगा. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a भाई crisis. क्या प्लान है भाई. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking भाई wine? क्या फंसाया है. It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Master DILUC is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? क्या हो गया भाई. Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch DILUC for सही me. में. Do not let him leave under any circumstances. ओके भाई ठीक है ठीक है. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on भाई you. यार ठीक है. हम देखेंगे पक्का डिलुक के ऊपर एकदम नजर गड़ा के रखेंगे That's him out of कि the वो way. कुछ काम ना करे और डार्क नाइट हीरो जैसा हरकत ना करे. ठीक है. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. देख रहे हो भाई वो गार्ड भाई हमें बोल के गया है कि भाई उस पे नजर रखो. यार निकलना है मुझे. तो गाइस हमारी बारी आ चुकी है कि हम आगे जाएं और अभी इस ऑर्डर का सामना करें. और जाके भाई There you दिलू को are. अपना पावर दिखाएगा. ओ यहाँ पे आते हुए एकदम Dealing with you Magara will be paate the हुए. easy part. ओ भाई ये तो भाई उड़ा देता बंदे को. ओ भाई क्या ही बोलूं अब. डैम बॉय. डैम भाई देख रहे हो पावर देखो भाई. ये भाई चील उड़ा दिया भाई लास्ट में. भाई सेकंड नहीं लगता भाई डिलुक को हराने में. देखो ये आगे बेशरम और बंदे लेके अपने.
अरे कहाँ पे बंदे? ओके रे, ये रहे। अरे हमें भी हराना वैसे। ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गाइस को साइज बोल रहा था, सॉरी। कंसंट्रेट कर दो। इजी। और ये ले। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हो सर जी? ये पीछे में खड़ा होके डांस कर रहा है मेरे सामने। अरे बाप रे, बंदे ही बंदे आ गए भाई, देख रहे हो कितने बंदे आ गए भाई। मरो आराम से। रुको भाई। मतलब तुम हार नहीं मानोगे ना? हम भी नहीं मारेंगे भाई हार। आ जाओ। पकड़ पकड़ के मारेंगे सबको। और किसी को आना, जल्दी आओ जल्दी आओ। Classic Master DILUC. Not a baddie left standing. Okay, तो nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the town. भाई हमने तो हरा भी दिया भाई स्लाइम। जितना टाइम में वो स्लाइम को हरा रहा था तक हमने हरा भी दिया। Glad that's settled. Let's get back to the tavern. हाँ रुक जाओ, जाऊँगा पहले। You think Huffman is back yet? ओके, मुझे ये मारना था बस। ये खाना वाना चाहिए होता भाई। ओके, तो ऐसा हो जाएगा ना कि डिलुक, मतलब हम अब हफमैन को बोल पाएंगे कि हमने वो देखा था, वो यहाँ से हिला भी नहीं ऐसा करके। मतलब हम एक तरह से डिलुक के एलिबाई बन जाएंगे ना। अरे यार, ये पोस्टर क्यों रख देते हो यार तुम सामने में? भाई मैं हमेशा पोस्टर में क्लिक कर देता हूँ भाई, हमेशा में पता नहीं क्यों। ओके, तो ये आ गया हफमैन हमारे यहाँ पे भाई। The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. Okay, तो इसे लग रहा है कि ये स्लाइम लग रहा है भाई इसे। Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. भाई बेइज्जती मार रहा है भाई। ये नाइट ऑफ फेमिनिस्ट की बेइज्जती मार रहा है। Master DILUC, please, have you no respect at all? क्या स्लाइम मारने के लिए रिस्पेक्ट करेगा? So much. You didn't leave, did you? नहीं तो ऐसा भाई हमने गैस, तुमने मुझे देखा कि मैं यहाँ से, हम तो यहाँ पे बैठ के भाई मस्त एप्पल जूस पी रहे थे अपना। नो, इट्स जस्ट रियली वार्म इन हियर। Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? भैया हमने एप्पल जूस पिया जिसमें चिकन चिली मिला दी थी। Huffman is getting suspicious. तो क्या करें? Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master DILUC? I mean, today's bartender. Did you see him leave just now? तो ये बता देंगे? Yikes! He's asking other customers. We're done for. तो ये बता देंगे कि भाई मुझे तो लगता, पता नहीं है भाई, बताएंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। Master DILUC? Why, no. He's been behind the bar this entire time. भाई I see. नहीं बताया इसने भी। Mr. Huffman, your dandelion जल्दी wine. पी के निकलिए यहाँ से। You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the भाई knights. पता नहीं डिलुक कितना हेड क्यों करता है। Never Night mind. of Feminist I must वाले be से। going. I should report back. Here, take this as a token of my क्या दे रहा esteem. है भाई? How odd. भाई बेइज्जती तो नहीं हुई वैसे, क्या की बेइज्जती हुई उसे पता नहीं है। That was too वैसे बच गए हम, close. उसे पता भी नहीं चला। Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? तो वो हमारे ही बंदे थे। Not all of अच्छा Or should I say, Oh. not all of ओके, us. काया भी आ गया यहाँ पे। Where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the ओके, show. तो इसे पता था कि हम ऐसा हरकत करेंगे। Been here this whole time? भाई काया तो और स्मार्ट है भाई, Correct. बहुत ही स्मार्ट निकला है। The Darknight hero's alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. भाई सही था भाई ये तो। So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, DILUC. You know me better than that. I have no interest in exposing अच्छी बात है secrets. भाई, नहीं बताए गए। I was just curious to see how far Mondstad'S Darknight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing.
Please see yourselves out. All right, all भाई right. इसका डिग्नोर मार रहा है I have बात no को भाई further honest। need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, DILUC. I hope you all have a wonderful night. ये दोनों राइवल्स है ना एक दूसरे के, मेरे ख्याल से काया और डिलुक एक दूसरे के राइवल्स है ना। What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master DILUC. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. ओके तो आएंगे भाई, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ओके तो ये क्वेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया मेरे ख्याल से। तो हाँ मुझे तो लगता है कि हमने कंप्लीट कर दिया। तो गाइस हमें पता चल गया कि डार्क नाइट हीरो कौन है, और हमें ये भी पता चल गया कि भाई डिलुक कितना पावरफुल है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जाओ मजे करो यार।